Series of MCQs, which is railway engineering. This is Engineer Azabasha, project management specialist, construction management specialist, contract management specialist, FedEx specialist, lettering and drafting specialist. You can take my expertise as well. So without further ado, let's begin our series. So we discussing the first question, which is basically on railway. So that's a question number 7. So the weight of the rail depends upon. That's a question for you guys. So the weight of the rails. So when it comes to rails, it's actually the rails of the railway, right? When it comes to the rails, so the rail are actually what are the rails? This means the rails. So we have started the railway series. The first question is, what is mean by rails in railway? So basically rails are horizontal external steel bars. Okay, it's actually horizontal external steel bars. It's horizontal external steel bars, right? If I talk about the rail, here, let me show you. These nuts and bolts are actually the fastening, nuts and bolts which connected these rails, right? The rails assembly, the rail system to tighten up nuts and bolts is called fastening. The aggregates, which are using here, like these aggregates, these are ballast, right? How many size it is in millimeters? That's an assignment and task for you guys. Write down in the comment box whenever you see this video in future. So these are the skills that Bacha is given to you by the grace of Allah. So these aggregates, coarse aggregates, are the car ballast. There is a slight sort of welding to that portion. So it's welding. That's actually, these rails are welded with each other, right? And sleepers are that wooden sleepers. The sleepers are actually the wooden sleepers. Let me show you. Like, these are the wooden sleepers. Actually, they are placed down between the two tracks of the rails. So, and then the rail is supported on top of that sleepers, wooden sleepers, right? And so these are rails. So rails are horizontal external steel bars, right? Rails are horizontal external steel bars between supports, and that supports are in the form of sleepers. These supports are in the form of wooden sleepers. Like, you can see that the rails are placed between that supports, and that support the wooden sleepers. The rails are placed on top of the wooden sleepers. Sleepers is placed, and it's welded. You can see in the image the welded portion are clearly showing that this is a welded portion. Okay, and the rails are placed on top of the wooden sleepers, and you can see the nuts and bolts. These are nuts and bolts in the image. That's called the fastening. This is sleeper, this is ballast, right? Then I show you the welding, and these are rails. So rails are basically a horizontal steel tracks, horizontal extending steel bars between supports, and between supports. So like these rails in a sense support each other as well. If I can make a relation of that, so that this rail support this rail, and this rail support this rail, in the form of these wooden sleepers in this form of support as well, because these rails are placed on top of the
sleepers, so it actually support each other as well. And also the sleepers provided supports to withhold it by in the form of fastening nuts and bolts and screws. And what are that screws? Is it cast iron screws or mild steel screws or steel screws, right? You can see a Titanic when it strike with that iceberg. So that might not be happened that drawn Titanic if the screw was not made from cast iron screw. That was made from steel screws, so that during striking with the iceberg, that Titanic will never gonna be tear off, wore up with each other, and the water will not gonna enter into a Titanic base and the base rooms and the base areas and the machineries and the equipments area, and then it rises up and break down and tear up Titanic in the middle of the Atlantic Ocean. So these screws are of the mild steel screw, cast iron screw, or steel screw. So I'm gonna make a tutorial on separate. Write down in the comment box. I will make a separate tutorial on that in the future. But write down in the comment box and feel explain that if you are a railway engineer. So these are actually supports each other in the form of this sleeper. Sleeper gives them a support. As you can see, rails is a horizontal straight steel bars, right? A rail is a horizontal extended steel bars between support that serve as a track, like these steel bars between these supports, which is sleepers, serve as a track for a train upon which the train moves on that, done their movements from one station to another station, right? So basically it work out that track line for the railway. For the railway, these rails work as a track line, and so that might not be a train, but it might be automobiles as well and other vehicles as well, right? Like vehicles like trains, automobiles, like we have the wheels and assembly of trains, of tracks which move on the track, right? To add one more thing, add your skills, as the Basha have their own hidden skills, alhamdulillah. The railway tracks are also called railway lines, alright? That's another question. That's another skill and knowledge. So the weight of the rails depend upon gauge of the tracks, speed of trains, spacing of sleepers, nature of traffic, and all of the above. So correct option is all of the above, right? That's a correct option. It depends upon the rails, depend upon which is the horizontal external steel bars that depend upon the gauge of the track. The gauge means that which quality, which size of the gauge or a section of the rails has been constructed. Let me discuss that thing in a hurry. As you can see, that's a section of the rails. The top assembly, a top section is like in this manner, indicating encircled, right? And that's a width or breadth of the top section, right? Then the down section is a slide of like a I. It's like a slide like a I section, right? But at the down assembly is the down section is that with the breadth B, this one, right? And this is the height, total height. So what is the total height between the top breadth and between the lower breadth? Explain that in the comment box, right? And despite of that, what is the top width of that and down width of this rail section, and this rail section of the railway track line? So also explain in the comment box to show you the realistic section of that. So let me show you the realistic section. That's the realistic section of that, right? Exactly, I show you in the image. So that's the top width, okay,
uh, that's the top width. This is small b, right? Yeah, this is small b, and this is the capital B, right? And from this to here, this top, that's the height, right? So write down in the comment box that recommended values for capital B and small b and h height of the rail section is how much, right? So this section, this will depend upon what? So the gauge here represent the thickness, and this is summary of this railway section. And rail transport system, track gauge, in American English alternatively track gauge, is the distance between the two rails of a railway track. It's actually, I will discuss with you and give you the skill of rails. So with that skills, actually the distance between two rails of a railway track, these rails make the track, of course, no doubt about it. But the distance between these two tracks is actually called a railway gauge of a railway track, right? Let me show you. So if any pathetic or stupid teacher or professor in an interview can ask you, so these are the skills Bacha is giving you, and for that you have to remember me your entire life in prayers, because it's a three types of gauge for interviews. It's a broad gauge, the meter gauge, and narrow gauge. As gauge is the defined as a minimum distance between the interface of two rails, right? That's important thing. Narrow gauge is 610 mm, which is 2 feet. And then narrow gauge is two types. We have like 762 mm, this is 2.5 feet. The meter gauge is actually which is exactly 1 meter, right? 1000 mm is equal to 1 meter in British calculations. So actually when you divide divide by 8, so it's actually 0.375 inch, with then add 3 inch with that, 3.375 inch, right? Then add then divide this by 12, so it gives you the feet calculations. Then of course add 3 with that, so it's going to be 3.281 feet, which is exactly equal to 1 meter. 1 meter is equal to 3.28 feet, so it's called meter gauge. So standard gauge is 4 feet and 8.5 inch, so 8.5 divided by 12 gives you 0.7083 inches. Then 4 with that is 4.70 feet, which is greater than 4.5 feet, right? The broad gauge is the maximum gauge, which is 1676 mm in American units, but in British units it's a 5 feet 6 inch, right? So that's the concept of the rails. So the weight of the rail depends upon the gauge of the tracks, speed of train, spacing of sleepers, nature of traffic, how much traffic it's moving. It's whether slow, it's a normal, it's a very slow, it's a fast. In Japan, it's a bullet trains are moving, which the nature of traffic is pretty high in Japan, and China, Europe, and America. In Pakistan, it's very slow. You have to wait for your tickets, and then there's a gaps between hours. Sometimes it's maybe 6 or maybe more than. Sometimes it may be 12 hours. Sometimes it may be 2-3 hours. All of the above. The right answer is the all of the above. But spacing of sleepers. That's the spacing of sleepers. Like one sleeper to another sleeper, distance between two adjacent sleepers is the spacing between sleepers, right? So let's discuss with that. This another section is a gauge, right? And that's a rail, and that's down is a sleeper, right? So it's been discussed. So rails are directly related to hard wooden sleepers and fixed with spikes.
The spikes are nuts, bolts, rivets, cards, fixations, and fastening also called spikes. So that's the correct option in my opinion. Edge sizing is done on hard wooden sleepers. So we discussed the edge sizing, right? Bearing plates are used on soft wooden sleepers, right? Chairs are used for bull-headed rails. All the above. It looks like all are the correct under railway engineering. So correct option is all of the above. Let me discuss these some of the items used in railway engineering. Are few phenomena, few definitions, few terminologies used in railway engineering. Let me discuss that first of all, right? So to discuss that, it's edging. Edging is done on hard wooden sleepers. The process of cutting the wooden sleeper at a slope of 1 in 20. When we cut the wooden sleepers in a 1:20 slope, what is mean by that? At the rail seat before laying is known as edging of the wooden sleeper, right? This is done to enable the rails to be slightly tilted inwards at a cant of 1 in 20 slope. It's a camber is in road, but that's the slope 1 in 20. Actually, cutting a wooden sleeper in a slope 1 in 20 to providing that support to the rails is known as edging on hard wooden sleepers. As you can see, there is one adhesion of wheels. Adhesion of wheel is actually the resistance offered by the friction. ये फ्रिक्शन होता है हमारे साथ बिटवीन जो ये रेल का टॉप सरफेस है उसके ऊपर जब रेलगाड़ी की पहिया घूमती है with the wheel of the rail is just move on top of the rail, then there's a friction between the surface of the rail and the wheel surface, so that's called adhesion of wheels. But edging of sleeper is in order to obtain an inward slope of 1 in 20 for the rail, 1 units if one direction and 20 units in the other direction. The sleepers are cut to form a table. The process of cutting the wooden sleeper or casting the concrete sleeper currently is known as edging of sleepers, right? As you can see, these wooden sleepers, there is edging of sleepers, edging of hard wooden sleepers, and there's an inward slope of 1:20 is given on these wooden sleepers, right? It's called edging of wooden sleepers. So bearing plate is used on all joints and curves to give more bearing area. These plates are made of mild steel. These plates have a cant of 1 in 20, it means slope of 1 in 20, and a groove in the center to prevent rocking, and normally called as mild steel center bearing plates. So these are the bearing plates, as you can see. Let me show you. These are the bearing plates, right? Okay, these are the bearing plates. These are the bearing plates, you can see. It distributes the load to sleepers over a large area, right? It distributes the load to sleepers over a large area. Of course, the area is so large, and prevents sinking of rails. And these rails cannot sink down, cannot settle down in soft wooden sleepers, right? It also prevents destruction of sleepers. If these bearing plates are not provided and these are not connected to these rails with these boards or fastening, then what happened? Destruction will occur. These will pop up and pull up when the rails are going through, and if they are pop up and pulled up, then these rail will be out of its tracks, and then the railway which is going on these rails or top of these rails will cause destruction and accidents, right, and fatalities. So it is one of that
purpose of these bearing plates to prevent destruction of sleepers due to rubbing action of rails, because the wheels are going on top of that surface and the action is occurs as a rubbing action. It's also used for better maintenance of gauge, right? Like if this is a one track of rail, this is one rail, and at the opposite side another rail. So for the better maintenance, these bear plates are opened, and if there's any maintenance and the rail top or rail section on wooden sleepers, so for that purpose we can also use maintenance. मतलब अगर इस बेयर प्लेट को हम ओपन करते तो हम अगर वुडन स्लीपर में मेंटेनेंस करना चाहें, या ये जो इसमें जो फास्टिंग लगे होते हैं इनमें अगर मेंटेनेंस करना चाहें, रेल्स में अगर मेंटेनेंस करना चाहें, समटाइम्स रेलगाड़ी की वज़न ज़्यादा होता है तो इसके टॉप सरफेस पर भी असर आ सकता है, ये भी डैमेज हो सकता है। तो जब बेयरिंग प्लेट को हम ओपन करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसलिए हम बेयरिंग प्लेट्स को हम सॉफ्ट वुडन स्लीपर्स पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, ये सबसे अहम फ़ायदा ये कि ये बेयरिंग प्लेट जो है, ये जितने भी स्पाइक्स लगे होते हैं, रिवेट्स, बोल्ट्स और नट्स और जिसको फास्टिंग कहते हैं, इनको आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, इसको होल्ड एंड फॉर्म, इसको मतलब फॉर्म रखते हैं। ठीक है, इसको आपस में जोड़ते हैं। अगर ये ना हो तो अगर रेलगाड़ी आती है तो ये स्लीपर्स जो उड़ जाएंगे और ये जो स्पाइक्स लगे होते हैं ये भी उड़ जाएंगे और डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही मचेगी। ठीक है, एंड परफेक्ट होल्डिंग ऑफ स्पाइक्स which is the fastenings of the rails which prevent shifting of sleepers। मतलब स्लीपर्स अपनी जगह से हिलते नहीं है, शिफ्ट नहीं होते, उड़ते नहीं है। ठीक है, तो ये बेयरिंग प्लेट्स का काम होता है। Chairs are used for bull-headed rails। तो the rail section whose head dimensions are more than that of their foot is called bull-headed rail। वो रेल सेक्शन जिसका टॉप डायमेंशन जो है वो ज़्यादा हो बनिस्बत जो फुट डायमेंशन है, जो फुट है, जो उसका बेस है, जो उसका बॉटम है, उसके डायमेंशन, तो उसको हम बुल हेडेड रेल्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ। जो नॉर्मल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस होते हैं, एक डबल हेडेड रेल होता है जिसमें ऊपर का जो हमारे साथ जो हेड है उसका जो डायमेंशन है, साइज़ है, जो असम्बली है, जो तरीक़ाकार है सेक्शन का, टॉप हेड का, वो सेम हो, नीचे फुट की तरह, बॉटम की तरह। बुल हेड में हमारे पास जो ऊपर हेड होता है उसका जो विड्थ है, या जो ये जो डिज़ाइन है, ये जो असम्बली है, जो विड्थ है, वो नीचे फुट के विड्थ से ज़्यादा है। और जो नॉर्मल यूज़ होते हैं वो फ्लैट बॉटम रेल्स होते हैं, जो नॉर्मली जिसमें नीचे जो बेस होता है, जो फुट होता है, उसका विड्थ हेड के विड्थ से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल्स के सेक्शंस होता है। ठीक है, इफ आई कैन सी दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द हेड विड्थ, दिस इज़ द वेब एंड दिस इज़ फ्लैट फुट, राइट। तो ये मोस्टली जो कॉमन जो सेक्शन है वो यूज़ होता है, इसको फ्लैट बॉटम रेल्स भी कहते हैं। ठीक है, दैट्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। You can see in the image, this is very common, right? And that's a sort of bull-headed, right? But if you can see, the head bottom is greater than the top, the bottom or the feet breadth, right? The foot is designed only to properly hold the wooden keys। सिर्फ वुडन कीज़ नीचे जो हमारे साथ जो फास्टनिंग होते हैं या जो हमारे साथ जो नट्स बोल्ट्स होते हैं, सिर्फ उसको होल्ड करने के लिए हम बुल हेड रेल्स में जो फुट है उसको हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उसको बांध रखे, with which the rails are secured to chairs, right? Chairs, we will discuss chairs only to provide necessary strength to the rail। 2 cast iron chairs are required for each sleeper। In this case, 2 chairs are required, right? And bull-headed rails. What about the flat rails? Write down in the comment box. So this assembly is called chairs, and these are the concerning parts of that is connected with that chairs. You can see in this is chair, and with these
fastenings are connected with it, right? And this is base plate, this is rail section, and this is chair, right? So what is chair, right? That is discussed. So the rail section whose head dimensions are more than that of foot is called bullheaded rail. In this type of rail, the head is made a little thicker and stronger than the lower part of the lower part means the foot, by adding more metal to it. This rail also requires chairs for holding them in position. So chairs are used only for bullheaded rails, because why? The head is made a little thicker and stronger than the lower feet of the rail section, right? So we use chairs and bullheaded rails. You can see the rail section is bullheaded, so a chair is provided, right? So to hold and the bullheaded rails, right? Like in this case, you can see this chair is provided. Okay, this chair is provided. This is chair. This chair is provided, right, to hold this bullheaded rails. This is chair and this is chair, right? So these are the connected parts with the chairs. Okay, as you can see, this is actually the ball and this is chair, right? So all these tools, like this is chair and this is the ball. Okay, as you can see in this section, this is a bull-headed section of a rail. This is ball and this is chair and this is sleeper, right? Let's move towards my next question, and question number 9. Pick up the incorrect statement from the following. Fish plates fit the underside of the rail head. Is this correct or not? Fish plates fit the top of the rail foot. Fish plates fit the web of the rail section. Our cross-sectional area of fish plates is normally the same as that of the rail section. So we will discuss one by one, right? Fish plates are used in railway tracks or rails to join the rail ends to maintain the line and level of the top table and gauge phase of the rail ends, and to resist the impact and prevent the deflection of the rail joint with the help of closely spaced sleeper support. ठीक है, मतलब इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या है? Let us discuss that. To join the rail ends, ये रेलवे ट्रैक्स है ना, इसके एंड को ज्वाइन करने के लिए हम फिश प्लेट्स यूज करते हैं रेलवे ट्रैक में. ठीक है, ये सबसे पहली बात है. लेकिन कितने डिस्टेंस पे यूज करेंगे और दो फिश प्लेट्स के दरमियान कितना फासला होता है, कमेंट में लिख ले नीचे. ठीक है, कमेंट में नीचे लिख लें दो फिश प्लेट्स के दरमियान कितना फासला होता है, या दो फिश प्लेट्स को हम एक दूसरे से कितने फासले पे लगाएंगे. इससे क्या तरीक़ार होता है, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख लें. ठीक है, टू मेंटेन द लाइन, ये जो रेलवे की लाइन है इसको मेंटेन करने के लिए हम फिश प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ठीक है, टू मेंटेन द लाइन एंड लेवल ऑफ द टॉप टेबल. ये टॉप टेबल है ना, ये जो रेल का टॉप है, जो हेड है, ये जो टॉप टेबल है, इसको लेवल के लिए, इसको इसके साथ लेवल करने के लिए हम फिश प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं. ये फिश प्लेट है. ठीक है, राइट.
और गेज तो दोनों स्लीपर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको गेज कहते हैं, ठीक है। तो जो गेज फेस है मतलब ये है कि इस पूरे सेक्शन को और गेज फेस को, इन वुडन स्लीपर्स को, इसके फासले को, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन। एंड गेज फेस ऑफ द रेल एंड्स, राइट, एंड टू रेजिस्ट द इम्पैक्ट, इसके ऊपर जब रेलगाड़ी की पहिया चलती है तो उसके इस पे जो ये फोर्स लगाता है, ठीक है, उस फोर्स को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ठीक है, रेल की पहिए की, तो उस इम्पैक्ट को ये क्या करती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती जो टॉप एरिया है इसके ऊपर, जो हेड है, जो टेबल है, टॉप टेबल है, टॉप द टेबल है, जो टॉप एरिया इसके ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसकी जो फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करती है? ये फिश प्लेट्स ऊपर से, ये फिश यहाँ पे पहिए को रेजिस्टेंस करती है, ठीक है, ऊपर से ये रेजिस्टेंस करती है और जो लोड का इम्पैक्ट है उसको रेजिस्ट कर दे, तो एक्शन एंड रिएक्शन वाला मामला आता है, ठीक है। और इसकी अपनी कितनी क्राइटेरिया है? कि आप कमेंट बॉक्स में लिख लें कि फिश प्लेट कितना लोड का एग्जिस्ट करेगा, बर्दाश्त करेगा, और इसकी क्राइटेरिया क्या है कि कितना लोड ये बर्दाश्त कर सके, जो ये इम्पैक्ट ये बर्दाश्त करे, और कितना लोड ये चाहिए कि पाई के और रेल का लोड ये बर्दाश्त कर लें, ठीक है, और इसके ऊपर गिरे तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, और इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड, कितना लोड इसको चाहिए कि ये रेजिस्टेंस ऊपर प्रोवाइड करे, ये फिश प्लेट्स, राइट। एंड प्रिवेंट द डिफ्लेक्शन ऑफ द रेल, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आते, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्ट है ना, ये रेल इस तरह डिफ्लेक्ट नहीं होते, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ डिफ्लेक्शंस की, तो ये रेल है ना, तो इस तरह से इसमें ये डिफ्लेक्शन नहीं आती, क्योंकि इसके ऊपर जब रेलगाड़ी पहिया चलता है तो जाहिर सी बात है वो इसके ऊपर इम्पैक्ट तो डालेगा, लोड डालेगा, तो उस इम्पैक्ट को रेजिस्टेंस करने के लिए हम ये क्या करते हैं? हम ये फिश प्लेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या और इसका भी ये सेक्शन है, ठीक है, तो ये हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसको बेंड करने से या डिफ्लेक्ट होने से बचाएं हम फिश प्लेट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये डिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। रेलगाड़ी के पहिए की वजह से, लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट ना हो। The load of the vehicle, railway, wheel load, and it puts that load on this rail track, so the fish plates are avoid deflection at top of the rail or the section of the rail at the middle of the web of the rail, whatever. Different fish plates have different size. In this case, the fish plates are like in this shape. These are the nuts and bolts. These are nuts and bolts. It's called fastenings. And this is the fish plate as well. So in this case, this is the fish plate, right? So to discuss more about that and prevent the deflection of the rail joint, like if this is a rail and this is a rail, so this is a joint, so we always provide the fish plate with the rails joint, right? And ये जो fish plate हम provide करते हैं, इसका जो center होता है, ये center है इसका equal बराबर, तो यहाँ से जितना ये लेंथ है तो ये लेंथ यहाँ से इतना भी यूनिट्स बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम जॉइंट्स को, रेल के जॉइंट्स को उसको आपस में डिफ्लेक्ट होने से बचाने के लिए और आपस में बांधने के लिए और डिफ्लेक्शन ना हो, तो रेल जॉइंट्स पर हम इस क्या करते हैं? फिश प्लेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो रेलवे का जो रेल सेक्शन है, जो रेल जॉइंट्स हैं, उसमें हम फिश प्लेट प्रोवाइड करते हैं। And to prevent the deflection of the rail joint are joints with the help of closely sleeper support. With the help of closely spaced sleeper support, right? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? Fish plates provide करते हैं, ठीक है। You can see in this image as well. In this image as well, this is the fish plate. So its shape is in
like in this manner. So fish plates are used in railway tracks to join the rail ends to maintain the line and level of the top table and मतलब जो रेल है ठीक है उसको उसका जो रेल एंड्स हैं दो एक रेल ख़त्म होती है दूसरी की एंड को मिलाने के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं जो लाइन है उसको मेंटेन करने के लिए ताकि लाइन मूव ना हो जाए अपने पटरी से अपने डायरेक्शन से लाइन डिविएट ना हो। एक तो ट्रैक जब डिविएट होता है तो अकॉर्डिंगली जो चेंज होता है जो रास्ता रूट होता है उसकी वजह से डिविएट होता है। लेकिन वैसे जो रेल है उसके डायरेक्शंस को स्ट्रेट रखने के लिए फिश प्लेट प्रोवाइड करते हैं ठीक है एंड्स को मिलाने के लिए प्रोवाइड करते हैं एंड टॉप जो लेवल है टॉप टेबल है या जो रेल का जो टॉप हेड है उसकी लेवल को मेंटेन रखने के लिए प्रोवाइड करते हैं एंड गेज फेस ऑफ द रेल जो गेज फेस है हमारे पास स्लीपर दो रेल्स के दरमियान जो फासला होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं ठीक है फेस से लेके एंड तक ठीक है टॉप से लेके एंड तक और इसी तरह दोनों रेल्स के जो गेज है ठीक है एंड टू रेजिस्ट द इम्पैक्ट जो रेल के पहिए का लोड होता है उसके लिए मुदाखलत प्रोवाइड करने के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं एंड प्रिवेंट डिफ्लेक्शन ऑफ द रेल जॉइंट्स ठीक है और ताकि जो दो रेल ख़त्म हो जाते हैं ऑब्वियसली उसको मिलाने के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसमें डिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए रोकने के लिए भी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोजली स्पेस स्लीपर सपोर्ट। तो स्लीपर सपोर्ट क्लोजली स्पेस स्लीपर सपोर्ट यही है फिश प्लेट इस में टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द व्हील फ्रॉम वन रेल टू द अदर। ऑफ कोर्स एक पहिए की लोड पहिया तो घूमता है रेल पे वो तो जाएगा वो तो रोकेगा तो नहीं कि एक रेल है इस पे ना आए और दूसरे रेल पे जाए एक पे जाए और दूसरे पे ना आए लेकिन इस पहिए का जो लोड है एक रेल से दूसरे रेल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम फिश प्लेट्स वी प्रोवाइड एंड यूज्ड इट राइट। तो फिश प्लेट्स फिट द अंडर साइड ऑफ द रेल हेड। ऑफ कोर्स जो रेल का जो हेड है उसका जो नीचे पोर्शन है ये इसके ऊपर प्लेस होता है हेड तो उसको क्या करते हैं उसके साथ फिटिंग के लिए इसको प्रोवाइड करते हैं और रेल का जो टॉप पोर्शन है उसके ऊपर जब पहिया जाता है तो उसका जो लोड है उसको बर्दाश्त करने के लिए और उसके लोड को रेजिस्टेंस देने के लिए हम ये फिश प्लेट प्रोवाइड करते हैं और उसको सपोर्ट देने के लिए उस लोड को इन द फॉर्म ऑफ बाउंस बैक रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्ट के लिए तो हम इसको प्रोवाइड करते हैं। फिश प्लेट फिट होता है रेल की जो टॉप हेड है उसमें जो सेक्शन है जो वेब से के टॉप पॉइंट के साथ जो सेक्शन है तो उसके साथ ये फिट होता है। तो ये ऑप्शन तो ठीक है दिस इज ओके इनकरेक्ट। यानी फिश प्लेट फिट टॉप ऑफ द रेल फुट जो रेल फुट है उसके टॉप के साथ भी ऑफ कोर्स फिट होता है ठीक है। तो ये भी ठीक है। क्यों फिट होता है जाहिर सी बात है क्योंकि ये मतलब अगर मैं इस तरह एक सेक्शन बनाऊँ ना लेट्स से अगर ये इस तरह एक सेक्शन में बनाऊँ राइट तो इसमें अगर ये फिश प्लेट्स मैं प्रोवाइड करूँ ठीक है इस तरह ये फिश प्लेट्स है राइट या सो इफ आई प्रोवाइडेड इट लाइक दिस वे तो जाहिर सी बात ये वो जगह है जो ये सपोर्ट करता है जो ये पहला ए पॉइंट है ये वो दूसरा है तो ये फुट है ना रेल फुट है तो फिश प्लेट्स फिट टॉप तो ये फुट का टॉप है तो इसके साथ ये फिट होता है। फिश प्लेट फिट द वेब ऑफ द रेल सेक्शन ये वेब है इसके साथ फिट नहीं होता इसके साथ ये फिट होता है इसके साथ ये फिट होता है इधर ये फिट नहीं होता। तो ये जो गलत ऑप्शन है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है राइट। और ये क्या कहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिश प्लेट्स इज नॉर्मली द सेम एज दैट ऑफ द रेल सेक्शन। बिल्कुल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है फिश प्लेट का वो अमूमन तौर पे नॉर्मली वो जो रेल सेक्शन है जो ये सेक्शन है ठीक है या रेल सेक्शन है ठीक है या इसका जो हमारे साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो फिश प्लेट का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया अमूमन उतना ही होता है ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो
बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट है इज डन अंडर रेल्स, रेल्स के नीचे, एट रेल्स, रेल्स पे ही, इन बिटवीन टू रेल्स, दो रेल्स के बीच में, इन बिटवीन टू स्लीपर्स के बीच में, बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट. व्हाट इज बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट? अगर हम रेलवे के सेक्शन को पढ़ ले, ठीक है, तो एक तो नेचुरल सबग्रेड होता है, ठीक है, जो नेचुरल ज़मीन है. फिर उसके ऊपर एक होता है हमारे पास कम्पैक्टेड सबग्रेड, ठीक है, ये रेलवे के हिसाब है. एक नेचुरल सबग्रेड होता है, फिर कम्पैक्टेड, फिर इसके ऊपर सब बेलास्ट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बेलास्ट होते हैं, क्रश एग्रीगेट्स होते हैं. उसके ऊपर भी बेलास्ट होते हैं, क्रश एग्रीगेट्स, जो उससे साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं. तो ये बेलास्ट से लेके नेचुरल सबग्रेड तक जो पोर्शन वो सब स्ट्रक्चर है, ठीक है. और सुपर स्ट्रक्चर में मेरे पास स्लीपर्स आते हैं, फिर इसमें रेल आता है, ये स्लीपर है, फास्टिंग सिस्टम आता है, ठीक है. तो ये सुपर स्ट्रक्चर में आता है. और ये जो पोर्शन है जो सब स्ट्रक्चर में आता है, ये शोल्डर्स है, ठीक है, किनारे हैं रेल्स के. तो ये मेरे पास क्या है, सेक्शन है हमारे साथ टिपिकल रेलवे ट्रैक लाइन का, ठीक है. अगर हम बैलास्ट की बात करें तो ये मेरे साथ वो मटेरियल है विच फॉर्म द ट्रैक, जो ट्रैक को बनाता है रेलवे ट्रैक का, अपॉन विच रेल रोड टाइज आर लेड, ठीक है, जिस पे हम रेल्स को, पटरी को हम बिछाते हैं. इट इज़ पैक्ड बिटवीन बिलो एंड अराउंड द टाइज, आल्सो नोन एज स्लीपर्स, ठीक है. और इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, स्लीपर्स रखते हैं, ठीक है, जो कि मतलब इस बैलास्ट, इस ये जो क्रश एग्रीगेट्स हैं इसके नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है, और ये बैलास्ट इसके इर्द गिर्द भी आ सकते हैं, ठीक है. और इन क्रश एग्रीगेट्स के बीच में भी स्लीपर आ सकते हैं, ठीक है. एंड अराउंड द टाइज आल्सो नोन एज स्लीपर, राइट. ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये बैलास्ट है, ठीक है. ये दो रेलवे ट्रैक्स है और इसमें बैलास्ट है. तो बॉक्सिंग इज द लूज बैलास्ट. ये भी हमारे साथ बैलास्ट ही होते हैं, क्रश होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं. प्रोवाइड राउंड स्लीपर्स, ये स्लीपर्स के इर्द गिर्द हम प्रोवाइड करते हैं. वाइल पैकिंग इज कम्पैक्टेड, और इसकी पैकिंग जो होती है इसको हम कम्पैक्ट करते हैं. वाइल पैकिंग इज कम्पैक्टेड बैलास्ट कुशन एज पर ग्रेडेशन बिलो स्लीपर्स, राइट. बॉक्सिंग प्रोवाइड बोथ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ स्लीपर्स. बस स्लीपर में जो थोड़ी बहुत स्लीपर में जो मूवमेंट्स होती हैं, अगर लॉन्गिट्यूडनल हो मतलब लेंथ वाइज हो स्लीपर्स, और लेटरल हो अगर ऊपर हो, मतलब अगर मैं स्लीपर बनाओ, सपोज ये मेरे साथ एक स्लीपर है वुडन, ठीक है, ठीक है, ये अगर एक वुडन स्लीपर है मेरे साथ, ठीक है, तो मतलब अगर थोड़ी बहुत ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करे या इस तरह, मतलब अगर ये, और अगर ये मतलब इस तरह लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल है लेंथ के साथ ये अगर इस तरह मूवमेंट कर ले, तो ये बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट को, जैसे मतलब इसमें वो कुशन आता है, ठीक है, मोमेंट्स के लिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. तो बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट क्या है, बैलास्ट को बिछाना होता है, ठीक है, क्रश एग्रीगेट्स को. अच्छा, यहाँ पर जो आंसर दिया है इन्होंने वो भी दिया हुआ है कि बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट हम करते हैं एट द रेल्स, लेकिन ये इन बिटवीन टू स्लीपर्स होना चाहिए. क्यों देखिए, जो हमारे साथ असल में जो बैलास्ट है, ठीक है, जो क्रश एग्रीगेट्स, इसको हम प्लेस करते हैं इन बिटवीन द टू स्लीपर्स. जो दो स्लीपर्स है उसके इर्द गिर्द, इन बिटवीन, आप वो इन बिटवीन हम प्लेस करते हैं, ठीक है. मैं आपको दिखाता हूँ. अब जो इस तरह ये बैलास्ट है, इसमें देखिए ये दो, ये एक स्लीपर है और ये दूसरा स्लीपर, इसके बीच में इन बिटवीन हम क्या करते हैं, बैलास्ट रखते हैं. इसको कहते हैं बैलास्ट क्रिब, CRIB. This process is called ballast crib. Actually, the ballast placed in between the two sleepers is called ballast crib, right? लेकिन however, the actual process of filling
द ballast in between the sleeper is called बॉक्सिंग. बॉक्सिंग जो है मतलब इन दोनों स्लीपर्स के दरमियान इस ballast को जब हम रखते हैं तो इसको हम कहते हैं बॉक्सिंग, बॉक्सिंग ऑफ ballast, राइट. तो हम ballast grip को जो है हम बॉक्सिंग भी कहते हैं, ballast बॉक्सिंग या बॉक्सिंग ऑफ ballast. ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है. तो अब सही ऑप्शन तो डी आना चाहिए, लेकिन बार के अब ये जो जो एप्लीकेशन है इंडिया बैक्स, राइट. तो अब इंडिया बैक्स वालों ने ऑप्शन बी करेक्ट किया हुआ है. तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में भी आपने बी पे जाना है अगर तुक्का मार सिस्टम हो पाकिस्तान और इंडिया में. तो कुछ लोगों की ओपिनियन है कि द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ballast अराउंड द स्लीपर्स, फिर ballast लूजली, इसको हम लूजली प्रोवाइड करेंगे. देखिए इसके अपने लेयर्स होते हैं, ठीक है. और ये क्या है, ये शोल्डर है ballast का, ठीक है. अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये क्या है, ये शोल्डर है, ठीक है. या ये क्या है, ये शोल्डर है, ठीक है. तो बेसिकली अगर हम द प्रोसेस, कुछ लोग कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ballast loosely around the sleeper is known as boxing of ballast, right.